देखें तो हमारी जितनी भी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, चाहे धान, ज्वार, मक्का, बाजरा और या तेल वाली फसल, सोयाबीन, मटर, अंडी, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, या किसी भी सब फसलों में ये जो है ना अपना प्रकोप देता है। और इसमें ये देखा गया है सामान्यतः, सुनाई दे रहा है ना? हेलो, सामान्यतः ये देखा गया है कि अगर फसल का औसतन, अगर इसका प्रकोप है तो औसतन उत्पादन लगभग 40% तक इसमें जो है फसल के उत्पादन में नुकसान करता है। और इसमें जो है एक जो विशेष करके जो इनके जो जड़ों से जो रासायनिक पदार्थ निकलता है, इक्विडेर होता है, जो धरती में जो मिट्टी को जो प्रदूषित करता है। और इसकी वजह से जो है वहाँ पे जो हमारी जो वनस्पति है, अन्य वनस्पतियां भी उगती नहीं है। साथ ही साथ ये मिट्टी के ये जो पौधा है हमारी मिट्टी को भी नहीं जकड़ता है। और इसकी वजह से ये देखा गया है कि जो पहाड़ों पर इसका प्रकोप होता है, तो अन्य वनस्पति नहीं उगती हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि पहाड़ों पे जो मिट्टी है वहाँ पे जो मिट्टी खिसकने की भी काफी घटनाएं होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा काफी नुकसानदायक पौधा है। और इसे नॉक्सिसियस बीट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य, पशु और हमारे वनस्पति तीनों के लिए हानिकारक है, इसलिए ये नॉक्सिसियस बीट की कैटेगरी में जाना जाता है। गाजर घास खाद्यान्न फसलों, और ये जो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं इनमें जो नोडुलेशन होता है वो नोडुलेशन को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है, जिसको जो है हमारे जो दलहनी फसलों के पौधे हैं उसको अवशोषित करके उपलब्ध कराते हैं, तो वो नहीं उपलब्ध होती, जिसकी वजह से फसल पे उत्पादन होता है। इसके जो परागकण है वो जैसे परागकण बैगन, मिर्च, टमाटर, सब्जियों के पौधों पर एकत्रित हो जाते हैं और परागण, अंकुरण एवं फल विन्यास को भी प्रभावित करते हैं तथा पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी और पुष्पशील असामान्यता पैदा कर देते हैं। और ये देखा गया है जहाँ पे ये पौधा झुंड होते हैं, जहाँ पे इनकी झाड़ियां होती हैं, वहाँ का अगर तापमान भी देखा जाए तो अन्य जगह की अपेक्षाकृत यहाँ पे इसका तापमान भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है हमारी जो वनस्पति, जैसे हम ये जानते हैं कि जो दूब घास है ये जो जहाँ जम सकती है वो दूब घास तक कोई भी नहीं जमने देते हैं, तो इतना ये ज्यादा इनका प्रभाव और प्रकोप होता है। और सब मनुष्य में अगर इसका जो देखें नुकसान, तो इसमें जो पार्थेनियम नाम का एक जो पदार्थ पाया जाता है जो डिमेंशिया, डिप्रेशन, अवसाद, सिरदर्द, माइग्रेन जैसे रोगों को पैदा करता है। जो हमारा जो पार्थेनियम नामक जो पदार्थ है जो हमारे मनुष्यों में डिमेंशिया, डिप्रेशन, अवसाद, सिरदर्द, माइग्रेन जैसे रोगों को पैदा करता है। पार्थेनियम से जो है ना चर्म रोग बहुत ज्यादा होता है और इसके कारण से गर्दन, चेहरे, पांव, चमड़ी सख्त होकर के कभी कभी फट जाती है और उसमें घाव बन जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा पार्थेनियम का जो बीज होता है इस पे 2 नीम जो है वो धागे से होते हैं, उसकी वजह से ये जो हवा में उड़ता है तो ये वातावरण को भी जो प्रदूषित करता है। साथ ही साथ जैसे मनुष्य जो है सांस लेता है तो सांस के साथ ये श्वास नली में, श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक अस्थमा जैसे रोगों को पैदा करते हैं, यानी श्वास नली के माध्यम से ये फेफड़े तक चला जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य में अस्थमा की भी समस्या आती है। और ये जो खरपतवार जो अगर इसके जो भी मनुष्य इसके संपर्क में आता है, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये पौधा जो है हमारे जीवन में जो बहुत ज्यादा हानियां पहुंचाता है। और हमने देखा है जैसे पशु है, जैसे इसे इसका जो पशु खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब उसको भोजन नहीं मिलता है या चारा नहीं मिलता है उस अवस्था में या जहाँ पर ये उगा होता है वहाँ पर कुछ थोड़ी दूसरी घासें होती हैं तो उसके साथ ये खा लेता है। तो वो क्या है कि इसके जो पेट में अल्सर, पशुओं के बाल झड़ने की समस्या, और जब उसका जो दूध निकलता है दूध में कड़वाहट होती है। अगर ये ज्यादा मात्रा में पशु उसको खा लें तो क्या है उससे जो है उनकी कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। इस तरीके से जो है ये हमारे मानव जीवन के लिए
वनस्पति जो हमारे फसलें हैं उनके लिए, साथ साथ पशुओं के लिए भी बहुत हानिकारक है। और ये जो ये कभी कभी ये देखा गया है कि यहाँ पर ये जो होता है वहाँ पे आपका आवागमन भी काफी प्रभावित होता है। जैसे आप रोड के किनारे है, अगर आप रोड के किनारे इसकी झाड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आप जा रहे हैं, तो अगर आप जो है अगर नीचे उतरना चाहे तो वो इतना बड़ा होता है, उस साइड आप नीचे नहीं उतर पाते, तो कभी कभी एक्सीडेंट की संभावना रहती है। इस तरीके से हमारे जीवन में ये काफी हानिकारक है। मैं समझता हूँ आपने मेरा ये लेक्चर सुना होगा, और मैं आपको ये कुछ आपको जानकारी मैंने दी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। खत्म हो गया लेक्चर मैडम, खत्म हो गया हाँ जी मैडम। इसमें इससे संबंधित कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, कोई हो तो। एक्चुअली आपका जो नेटवर्क है हमको लगता है उसकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है ना हम लोगों के आवाज कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। Thank you so much, sir, for giving important information about Parthenium. आपके लेक्चर से अवश्य हमारे छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने आपको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आपने हमारे इस अपने व्यस्ततम समय से हमारे इस वेबिनार में समय दिया, इसके लिए मैं पूरा महाविद्यालय परिवार, डिपार्टमेंट सभी आपका आभारी है। और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि जब जब हमको इस तरीके की कोई भी वेबिनार आयोजित करने का मौका मिलेगा तो हम आपको हमेशा इनवाइट करेंगे, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप हमें अवश्य समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा हम भी बोलना चाहें, दोबारा से बोलना चाहें, चूंकि हमारा जो शुरुआत में व्यवधान हो गया, तो हमको जो है प्रिंसिपल मैडम और आपको धन्यवाद देना था कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण वेबिनार में मेरे को एक अपना बात रखने के लिए मौका दिया। उसके लिए आपको, प्रिंसिपल मैडम को और आपकी जो कमेटी है सभी को मैं पुनः से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी जितने भी हमारे छात्र या हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरी अगर वार्ता समझ में आई होगी वो तो ठीक है। और मेरा नंबर है, वो नंबर नोट करना चाहें, कभी भी आप क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित कोई भी आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 9307015439 ये मेरा नंबर है। चूंकि मैं इस समय जो है मेरे को थोड़ा साइटिका के पेन की वजह से ना मैं प्रॉपर्ली बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा साइड में लेट करके आपको ये चलिए ईश्वर से बिल्कुल है कि आप बहुत जल्दी ठीक ठाक हो जाएं और बढ़िया परफेक्ट हो जाएं और खूब अच्छे से काम करें, सोसाइटी को बहुत खुश। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक अभी हमारे सामने डॉक्टर के.एम. सिंह सर थे, जिन्होंने पार्थेनियम के ओरिजिन के बारे में और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया। अब हमारी नेक्स्ट डिस्टिंग्विश स्पीकर डॉक्टर सौरभ वर्मा सर हैं। He is also a senior scientist from Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology. सर सौरभ सर, क्या आप जुड़ चुके हैं? डॉक्टर सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा सर, क्या आप जुड़े हैं सर? ये पंकज, सौरभ वर्मा सर को फोन लगाना पड़ेगा। जी के.एम. सिंह सर, क्या सौरभ सर जुड़े हैं क्या सर? मैं चेक करता हूँ मैडम। जी जी बिल्कुल। जी सौरभ सर, आप ज्योति वर्मा नाम से जुड़े हैं क्या सर? ये वालों को फोन लगाना है, नहीं पा रहे हैं। हेलो, फोन लगाइए मैम, फोन लगा दीजिए।
जल्दी से ज्योति वर्मा, ये ऑलरेडी म्यूट है, अनम्यूट है। आ गया बना दो, पोज बनाओ। हाँ सौरभ वर्मा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आज जुड़े तो हैं और सर बस आपको हम को होस्ट बना रहे हैं सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर for being a invited speaker on this webinar, and on behalf of my department and college, we warmly welcome to on this webinar, and I would like to welcome you that you are a senior scientist and you have a number of papers in national and international journals. You are doing your coursework on your crop related development and management programs. I would like to request sir you proceed on your topic Parthenium management without further delay, because some technical issues and netted in our network connectivity. So please sir, you become a ये बच्चों के जो है ना मोबाइल म्यूट कराइए मैम, जो है ना उनकी वजह से डिस्टर्बेंस। डॉक्टर सौरभ जी अपना शुरू करें। बोलो Yes. उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है।
हेलो। हाँ मैडम। जी सर, डॉक्टर सौरभ वर्मा सर। मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ गई सर। सॉरी सर फॉर टेक्निकल इश्यूज। ओके ओके, वो मैडम प्लीज मेरी कंटिन्यू तरफ सर। से। जी 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 ओके सर। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर सौरभ, आपके यहाँ 2 मोबाइल खुले हैं ना, एक बंद कर दो, इको हो रहा है। ओके सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आने लगी, आप बोलिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपका इको हो रहा है, बगल में शायद दूसरा मोबाइल खुला है ना, उसकी वजह से इको हो रहा है। उसको उसको सर मैंने अनम्यूट कर दिया है वैसे। चलिए आप बताइए, बोलिए। ओके ओके सर, माय आई। ओके सॉरी यार, अभी को नहीं कर रही होगी सर। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ, अब सही आने लगी आवाज आपकी। ओके ओके, थैंक यू सर। एक एक्सक्यूज मी सर, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट करें, जिससे सर की आवाज क्लियर आ सके, हम लोग लेक्चर का मजा ले सके। प्लीज छात्राएं जो भी जुड़ी हैं, कुछ अनम्यूट दिख रही हैं, प्लीज आप लोग जल्दी से म्यूट करिए। डॉक्टर एसबी सिंह प्लीज सर म्यूट कर लीजिए आप। केएम सिंह म्यूट कर लीजिए सर। विद्या भारती जी, थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैडम ऑलरेडी दे चुकी हैं, मेरा आई एम डॉक्टर सौरभ वर्मा, एग्रोनॉमी फील्ड से, एंड आई एम सीनियर साइंटिस्ट आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड द टॉपिक which very meaningful seminar is on the topic, that is the Parthenium awareness and management. I will go through Madam, please allow for screen sharing. Please allow for screen sharing, or maybe add me as a co-host. ये सर मैंने आपको co-host बना दिया है सर, आप क्या कर सकते हैं। Okay. मैडम अभी एज ए पार्टिसिपेंट ही मैं ऐड हूँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर, अभी एज ए पार्टिसिपेंट ही हूँ मैडम, इस को-होस्ट। अच्छा एक बार चेक करते हैं। जी सर। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए। मैम सौरभ वर्मा वाली आईडी को एज ए को-होस्ट बनाइए। क्या सर ये है कृषि विज्ञान केंद्र वाली। नहीं, ये वाली नहीं मैडम, सौरभ वर्मा वाली आईडी। मैडम सौरभ वर्मा वाली आईडी, मैडम जो वाइफ वाली आईडी है, ज्योति वर्मा वाली आईडी, उस पर बनाइए। सौरभ वर्मा वाली आईडी के
जी 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 सौरभ वर्मा यहाँ पे सर्च मारे। 1 मिनट सर बस। हाँ ओके ओके नो हो गए ओके ना? थैंक यू मैम जी सर, अब आप होस्ट बन गए सर, दोनों को ही बना दिया मैंने। ओके मैम थैंक यू मैम ओके थैंक यू फॉर जी थैंक यू। Okay, I will start my lecture. The lecture was on the management issue of the Parthenium. Dr. K.M. Singh Saab already briefed you about the what a Parthenium, what are their real effect. I will go through brief on issue. This one is the basic one, and you can see the pictures of Parthenium and all of you are already seen this wheat. These are the one of the prominent wheat now in India and other countries also like Australia and other. This is the one thing, the distribution. You can see the here. डॉक्टर साहब इसे प्रेजेंटेबल फॉर्मूला वो नहीं आया, प्रेजेंटेबल में आया। Okay, sir, मैं देखता हूँ। One minute, sir. Okay. इसका जो पीछे लिख रही है, मोबाइल चालू है ना, इसीलिए लिख रही हूँ। एक्चुअली मेरे तुम बनाई हो मेरे सिस्टम में तो ये आ रहा है प्रेजेंटेबल में, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। आई विल चेक। एक्चुअली ना आपका नेटवर्क पुअर है ना सर, आप बताइए। ओके okay, I will just continue my lecture. It is also known as, in common word, it is known as a carrot wheat, white top, Congress grass, or in local gajar grass. Actually, it look like a carrot, especially is its leaves and its plant part, as we seen in, it is just like a gajar grass. The more it is it is not a native of our country. It is from subtropical of North and South America, especially when we have a PLA schemes in 1958 to 60, when we procure Parthenium from America and all other countries. That by any mistake, this Parthenium, the seed is came to India, and now it become a menace. Fast maturing annual. It is one of the most fast maturing annual with deep taproot system and an aided system that became woody with ages. It has a lot of seed bank. A single plant can generate. It can produce more than 15 to 20,000, 25,000 seeds. Even a 1 meter square area can produce more than 1.5 to 2 lakh seeds. And a major issues are there. A saying is that one weeding is equal to 7 hoeing. Means if a seed is dispersed in an area, in locality, it has a potential to germinate 7 years. मीन्स मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए कहीं पड़ गया हो, कहीं नीचे
वो नीचे चला गया और तो उसकी क्षमता है दैट इज पोटेंशियल कि 7 years तक वो जम सकता है, मतलब ये उसकी दैट इज इट्स पोटेंशियल। तो प्रॉब्लम क्या है कि वीट इज इट इज अ नेशनल सिग्निफिकेंस, one of the worst weed in the country because of its invasiveness, potential for spread, economics, and also as an environmental impact also. Severe allergic reaction to the plant or pollens that Dr. Singh already discussed, dermatitis, hay fever, asthma. These are the problems or symptoms which we can see our human body, even on the cattle. It is a threat to biodiversity of India continent, especially in Himalayas, which is a biodiversity or hot spots of biodiversity in India. Himalayas, Western Ghats, Northeast, and the Nicobar Islands. It can germinate, grow, mature, and set seeds. This is the basic, actually, is the case. Within 4 weeks, it can complete its life cycle. 4 weeks means within a month. मतलब 1 महीने के अंदर ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है और सीड प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसकी कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज और एज अ वीड फॉर अस for in context of India, in coastal valley region, and is a toxic to stock contact, and Parthenium in particular, its pollen can cause allergic reaction. The best way to prevent allergic reaction to avoid contact with it. If we go for its management or cultural practice or manual weeding, that is also cause a problem for a person or for a labor to go for its eradication. Or it is easily spread. It seeds very light seed, easily spread through vehicles, machinery, grain, or within food grains or with powder. And for management part, we go for we use for integrated weed management system, mechanical, chemical, biological methods through which we can manage these Parthenium weeds. ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? And the management part, so the first and the most management part is to prevent to spread in new areas. If a major area it has been already covered, but other area we have to go for, a government would go for the legal notice that this should be restricted to a particular area or already spreads, and the newer area we have to at any cost we have to prevent them from further spread. New outbreak control to new outbreak control in pasture and barrel land we have to control, or we can go for the management. एक दूसरे लोग आभार करते उनको अच्छा लगता है, वही बोल रहा है भाई आभार करता है। And if we go for the management practice, there are 4 to 5 major management what we will call the weed management practices or integrated weed management, that is hand weeding, mechanical, cover cropping, and also the chemical control. The last option is for the chemical control. And with the hand weeding, it is the simple by we go for simply manual weeding can be done with proper precautions, like we wear gloves, and we go for kurpi or other smart tools. We can go for the manual weeding. Among the mechanical weeding, that is we either in barren lands or in orchard, we go for our tractor implements or bullock implements. We can go for that. It is based on the which type of land, how much area we have to cover for that, and for the mechanical methods. Nature types and nature of tools
is used for the weeding, that is manual weeding. I'll always make about manual weeding. There are a lot of weeders, manual weeders and power operated weeders. Through that we can go for tractor operated weeders. We can go for, or simply have cultivator, disc harrow. These are the implements through which we can go for his mechanical weeding. On an average, if there is an area for a particular area or an orchard, we within year we can go for 3 to 4 mechanical weeding for complete eradication of this Parthenium. Among the integrated weed management, the one of the most method as an agriculturist, as an botanist, we can go for cover cropping. Cover cropping is a way where phyllo or in orchard to suppress the growth of particularly Parthenium, to bring additional income to growers. Within the, if we go for intercropping, as an intercrop, we can go for the recommended intercrops. If we consider that is in for summer season, we can go for vegetables like bottle gourd, bitter gourd, onion, chilies, cowpea, black gram, green gram. That we can go there. For winter, we can go for the intercrops like peas, turnip, cauliflower, carrot, radish, gram. Particularly in orchard or wider row spacing, we go as the intercrop. We go for especially go for pulse crops, even pulse vegetables also, which can directly fix the atmospheric nitrogen to the soil, and which is used for the other main crops. And the next is the chemical control, which is the most, which is a part of my subject also. Through chemically, it is the chemical control is now one of the cheaper method. Especially we can go where there is barren lands or roadsides, surround of buildings, or in there this herbicide, this weed, especially for Parthenium, you always find there, and we can particular these areas we can go for herbicide. That is a weed. We can also call weedicides or herbicides. There are two types of herbicides. That is the pre-emergent and the post-emergent. Pre-emergent is before germination of wheat, we can go for chemicals. That is pre-emergent. And the post-emergence, that weed appears, it is on full bloom. Then for that herbicide, then for herbicides. These amino acid and the other classification of grassy weed and broadleaf herbicides, which are of particular type. One herbicide will be used on the grassy weeds, another herbicide repetition and combination capable of killing that. These we have Parthenium is a broadleaf weeds. Those herbicides, those chemicals we have to select which can kill the broadleaf. Then the herbicide may be also classified as selective and non-selective. Selective herbicides are those which are selective in nature and kill particular weeds. Non-selective are there is a mode of how can herbicide can work on weeds, with the post plant or a weed plant, that is leaves for absorption, that is one part, that is last of and then there is a plant. As an outside movement, these are the we have to consider in mind while applying it.
Exhaustion is the main part. If there is a cloudy weather or the weeds are not in active phase, it is a dormant phase, or there is a dry summer and weeds are in just the survival state. Then if you apply any herbicide, there is a least absorption plant part and the weed is not till then. These are the three factors which we have to consider while applying an herbicide. Among the different herbicides which we are control very selective or for orchard or in crops. However, if we go for barren lands or any surrounding of the any buildings, we can go for selective herbicides. Among them, paraquat. This is the non-selective contact herbicide. Means if there is a there is weeds or its Parthenium is already it is in full bloom, we can go for paraquat. Paraquat directly it is non-selective contact where as you spray within 2 to 3 hours it can kill whole of the plant. However, it is only a contact type. Among them, the next one is the glyphosate. Glyphosate is one of the herbicide which is a selective and systemic and selective. Systemic means it can go through the whole of its part from root to the top of the plant part, and it completely kill all its plant part within 7 to 8 days. And the other chemicals are also there. That is bromacil, dalapon. Even if there is a barren land or surrounding a building or in a society, we can go for simply normal salt, that is the common salt, at the rate of 4%. That means 40 grams per liter of water. Salt is it is recommended that it is not used in any field lands where the crop can be grown. Otherwise, sodium will cause ill effect to the field, especially cause ooser soils. That the common salt is only on the barren lands only, or near the surroundings or near our roadways. These can be used. Another way also we can what are the other ways how we can manage this Parthenium? Actually IIWR, Indian Institute of Weed Research, already developed a method of composting this Parthenium. This can be used as a social link also, or as a village level or the community level, where we can go data for compost making. The compost but the compost should be prepared by pit method and developed by IIWR. By this method, good quality compost Parthenium bad quality is prepared. Then there is the should be there. Anaerobic methods. We can go for posting this Parthenium through anaerobic method. Through this anaerobic method, the seeds is completely killed due to high temperature inside the pit. The size of the pit is 3 meter depth, 6 meter wide, and 10 meter in length. Length can be manageable. However, the depth of pit is fixed, so that we can manage as an conditions. On the base of the pit should be tightly closed, and where we can go with first spray that Parthenium weed
in the pit on each layer, and then a layer of Parthenium should be made on that. Each layer we had go for 100 to 150 kg of dung slurry, 20 to 500 gram of urea should be sprinkled on them, and likewise one by one layer we have to prepare, and the whole pit should be completed. And after we have to plug all the openings of the pit through soils and dung. After 2 to 4 months, depending on the maturity of the plant, we may get 37-35% of compost with initial Parthenium fiber. Then again, we have to there is some downtrend of the pit is seen. We have to add some more Parthenium wheat on it, and again all the openings. Likewise, this time we have to prepare the Parthenium. So this is all about the management. And if there is any query, we can discuss it now. स्पेसिफिक Okay, thank you for तो listening. अब इसमें क्या है, प्रोटीन संचय में प्राकृतिक रूप से पाया बीस आवश्यक होता है। सक्रियण एटीपी द्वारा विशिष्ट सक्रियण एंजाइम्स अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है, एंजाइम हो गया ये आपका, जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड एडिनाइलेट का निर्माण होता है। हेलो जी सर। ओके मैडम जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनुपमा मैडम को यहाँ पे बुलाती हूँ कि वो आए और हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर डॉक्टर सौरभ वर्मा जी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। अनुपमा मैम, अनुपमा मैडम आ रही है मेरी? हाँ आ गई आवाज जी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। सर बहुत ही अच्छा लगा कि आपको कल मैंने को इनवाइट किया और आपने महत्वपूर्ण सा दिया और पार्टिसिपेंट के बारे में हम लोगों को बताया। गाजर घास हम सुनते कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हम लोगों को प्रोवाइड कराई, उसके लिए हम लोग सभी हमारा विभाग, हमारा जूलॉजी डिपार्टमेंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत आभारी हैं। क्योंकि में तो सुना था, लेकिन बताया कि वास्तव में ये हमें देश की हमारे यहाँ की नहीं है कि वास्तव में साउथ अफ्रीका से आई प्रजाति है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण था हम लोगों के लिए। दूसरी बात ये है कि गाजर करने वाली और ये बहुत कम समय में 25 से 50,000 सीड प्रोवाइड कराता है या इसमें क्रिएट कराते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कम समय में ग्रो हो जाए हम सबके लिए, क्योंकि एक बात और भी आपको डिफरेंट डिजीज इसके माध्यम से भी देखा स्किन से रिलेटेड वो इसके द्वारा हो जाती है। इसलिए हमारा परिवार, हमारा महाविद्यालय परिवार सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। पूरा महाविद्यालय डॉक्टर अनुपमा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वर्मा सर
आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आप जैसे सीनियर साइंटिस्ट आज हमारे इस वेबिनार में हम लोग के साथ हैं। ये हमको गौरवान्वित कर रहा है। हम लोग को आप जैसे लोगों को हमको सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। Thank you once again for your giving precious time, give us with us, and you are with us. Thank you so much, sir, on the behalf of my department and from my college. और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे समय साथ हमेशा अपना वैल्यूएबल समय हमें देते रहें और हमको अच्छे अच्छे रिसर्चर, नए नए रिसर्च, नई नई चीजों के बारे में अवगत कराते रहें। थैंक यू। अब कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सलीम सिंह सर, जो शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, डॉक्टर सलीम सिंह सर, आप जुड़ चुके हैं सर हमारे साथ। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है सर। जी जी सर, सलीम सिंह सर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। Firstly, I would like to introduce Dr. Salim Singh sir. He is an associate professor in his specialization in agronomy, and he associate professor in Acharya Narendra University of Agriculture Technology, Ayodhya. At present, he is working in Krishi Vigyan Kendra, Barrack First. He got doctorate degree in the year 2005 and also got regular appointment as an assistant professor in the year 2005. Actively participated in district, university and state level activities like Kisan Mela, Goshti, exhibition, sponsored trainings, TV, radio talks. And he published a lot of papers in national and international journals. सर, आपकी इन स्पेशलाइजेशन के साथ आप पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे आज के वेबिनार में पूर्ण रूप से बहुत आपका स्वागत है। सम्मान के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। मैं बहुत समय न लेते हुए आपको आज की इस व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। वेलकम अगेन सर। और मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया है सर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अनम्यूट कर सकते हैं सर आप वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। ए पंकज, हेलो जी सलीम सिंह सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो बैठा लीजिए।
जी केएम सिंह सर। जी 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 सर, उनको इन्फॉर्म करिए कि मैंने को होस्ट बना दिया है। हाँ मैं देख रहा हूँ शैलेंद्र जी, सिंह। जी मैम कम्युनिकेट कर दिया मैंने उनको ना, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। जी मैम। जो भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उनके किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो तो वे बेझिझक लिख के पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे रिस्पेक्टेड जुड़े हुए हैं, आपको आंसर देंगे, सजेशंस भी दे सकते हैं। मैंने डॉक्टर शैलेंद्र कर दिया आप लोगों। केवी सर की आ रही, केवी सर की आ रही है सर, आप ही नहीं आ रही, फिर से बोलिए सर। नहीं आ रही सर। एक्चुअली आप एक मिनट, हाँ माइक आपका ऑन हो गया, अब बोलिए। एक मिनट, आपके 2 नंबर से वो है एक। अब बोलिए सर, 1 मिनट बोलिए सर, कैसे बोलिए। हाँ सर बोलिए सर, 1 मिनट फिर से सर। जी शैलेंद्र सिंह सर। हेलो सर, दो नंबर से सर आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र
पहले एक नंबर को अनम्यूट वो बंद कर दीजिए, दूसरे एक ही से आप जुड़िए। जी सर। जी सलीम सर बोलिए थोड़ा सा। सर आपका माइक भी ऑन है, आपको सलीम सर। बंद है कि नहीं? हेलो सर। नहीं थोड़ा कठिन तो होता ही है, देखिए। Dr. Sailendra, go for your audio through your mobile. या सर इनका ऑन है। ये वाईफाई सेल्यूलर डेटा ना करके सर उससे करिए तो Dr. Sailendra, go video through your system and your voice is through your mobile system, है ना? Go for that. अरे डॉक्टर साहब, अगर वीडियो नहीं चल पा रहा है तो वैसे ही आप बता दीजिए ना। आवाज आ रही है? जी सर आ गई आवाज। जी सर आवाज आई थी सर अभी आपकी।
हेलो। हेलेन जी, आप वीडियो ऑफ करके अब बोलिए तो आ जाएगी आपकी आवाज ना। नेटवर्क इशू है आपके यहाँ भी। जी सर, कृपया बोले सर। अभी आपकी आवाज आई थी। आपका माइक भी ऑन है सर। हेलो सर। हेलो। दो नंबर से जुड़े, दोनों से मैंने इसको कर दिया। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आई। जी 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 सर। हाँ मैडम, इससे बोले स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू करिए। जी जी, थैंक स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यू। स्क्रीन पे स्क्रीन स्लाइड तो दिख नहीं, रही है? स्क्रीन शेयर तो नहीं हो स्लाइड रही दिख है। रही है मैडम? स्लाइड तो नहीं दिख पा रही है सर। ओके ओके ओके, अभी देख रहा आप हूँ ऐसे ही कंटिन्यू कर लीजिए सर। मैडम। अभी दे दो, 1 मिनट रुकिए। जी ओके सर, कोई बात नहीं। शेयर स्क्रीन करिए। जो ग्रीन कलर का सर रहता है नीचे, शेयर कर रहे हैं क्लिक इसको। करेंगे तो हो जाएगा। जी जी। Dr. Saleh, your video is off. Video is off here. Your Dr. Saleh, हाँ your हाँ video हाँ, is off. ओके ओके, ऑन कर दीजिए। Okay. डॉक्टर साहब, डॉक्टर सौरभ वर्मा, Yeah. ये फाइल कैसे शेयर करें? हो रही है? Okay. Just first open your file. Okay, no? Just open your file and minimize it. Okay. Then only go through your through Zoom and share as the video. तो मिनिमाइज कर रहे हैं। Before sharing, your file is on. Your file is open. है ना? Then you go for sharing. अभी खत्म हो गया है। अरे डॉक्टर साहब, शैलेन हाँ जी, आप जो है ना पहले हाँ, जो है ना बताएं। पहले फाइल को खोल लो, फिर उसको मिनिमाइज कर दो टूल बार पे, फिर उसमें शेयर उस पे चले जाइए। फाइल जूम से तो फाइल खोली है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करिए और फिर शेयर वाले जो ग्रीन सा वो बटन बना है ना, उससे वह उसको रिसीव कर लीजिए, शेयर पे आ जाए। शेयर वाले को शेयर क्लिक कर वाला जो है दीजिए, ना, क्लिक कर हाँ, दीजिए। बस तो क्लिक आपका कर दीजिए, डेस्कटॉप आ जाएगा सामने, फिर एक एक डेस्कटॉप आ चीजें जाएगा। आप क्लियर हो जाएंगी। हाँ वो स्लो चल रहा है मैडम, असल में दिक्कत ये आ अच्छा रही है। जी वो जी। नेटवर्क इशू है ना, वैसे तो
आप उसको अपने पे खोल लीजिए और उसको देख के बोल दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लोग लिसन कर लेंगे आपको। हाँ नहीं शेयर हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर दीजिए उसी को देख के। स्टार्ट हो गया सर, शेयरिंग हो रही। चलिए आगे गुड। यस सर आगे। स्लाइड को फुल स्क्रीन में ले लीजिए सर। नीचे से फुल स्क्रीन कर दीजिए, नीचे रहते हैं 3 ऑप्शन, नीचे तरफ उसको भी क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। डबल क्लिक करिए, उधर से डायरेक्ट, हाँ यहाँ से। कुछ और हो। नीचे सर, नीचे ये वाले नीचे वाले बार में आइए, टूल बार में नीचे तरफ, ये येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर राइट हैंड साइड पे होगा ना? नीचे तरफ आइए। हाँ हाँ, वो ये एक यहीं पे करिए जी, हाँ क्लिक करिए। बड़ा हो जाता है। मैडम हो रही है स्लाइड शेयर? स्लाइड शेयर हो रही है लेकिन वो ना प्रेजेंटेबल मोड में नहीं आई है ना। प्रेजेंटेबल मोड में ये ऊपर क्या है? यूआर स्क्रीन शेयर। हमको भेज देते पहले तो हम अब कर देते। आया मैडम? बड़ा नहीं हो रहा है, चलिए हो गया सर, कंटिन्यू करिए। आपने डॉक्टर साहब नेटवर्क बात प्रॉब्लम है, आप शुरू करिए, आप बेहतर है। ठीक है ओके ओके। My topic is biological control of Parthenium, and I'm presenting my slides. You can see Dr. Saurav Verma has earlier discussed about Parthenium management, and my subtopic you can see there is physical control, chemical control, and biological control. And I'm going for biological control. So you can see the combined effects of biological control agents reduce the density and vigor of Parthenium and increase grass production, or you can say agricultural production. So there are some insect species through which we can control Parthenium, like Epiblemma strenata, Listronotus, Chronix, Lutentus, Conotrachilus, Elbow, Cineceres, Deculatrix, Parthenica, Carbantha, Ichthysia. There are some rust species also, by which like winter rust and summer rust, Puccinia abrupta and Puccinia xanthi, by which the Parthenium can be controlled. So in this my lecture, my focus is on Zygogramma bicolorata, but also I would like to discuss about other moth species like Epiblemma strenana. Is a moth introduced from Mexico, established in all Parthenium areas. The moth's larvae feed inside the stem, forming galls that stunt the plant's growth, reduce competitiveness and seed production. Next one is Listronotus septuspicens, is a stem-boring weevil from Argentina, but is of limited success in reducing Parthenium infestation. The most important one is Zygogramma bicolorata, which easily survive in Indian conditions because Mexican climate is lot more similar to Indian conditions. So this
Mexican beetle, which is also its common name, is a defoliating beetle from Mexico, which is highly effective. Where present, it emerges in late spring and is active until autumn season. Semichronyx luteolentus is also found in Mexico, lays eggs in flower buds where the larvae feed on the seed heads. Next one, Conotracheilus albocinensis is a stem galling weevil from Argentina, produces small galls and is still becoming established in Queensland, Australia. Buccellatrix parthenia is a leaf mining moth from Mexico. Larvae feeds on the leaves, leaving clear windows in the leaf. Carbamenta ethicea is a stem-boring moth from Mexico, which is becoming established in favorable sites in the northern central highlands of Mexico. I would discuss on Parthenia abrupta is a winter rust from Mexico that infects and damages and leaves the stems. It damages the leaves and stems, and finally the plant decomposes in some time. It is currently established over worldwide area from Claremont south. It requires night temperature of less than 16 degrees and 5 to 6 hours of leaf wetness. Sporadic outbreaks occur where weather conditions are suitable. Then other rust is Parthenia xanthi. It's a summer rust from Mexico that weakens the plant by damaging the leaves over the summer growing season. It is currently established and spreading at number of sites from north to Charters Towers to Injune in the south. So these are the some species of insects and rust species which affects the, or you can say damages the Parthenium plants. So this is a biological control, we can use it. Next one. Next one is the biological control. Earlier I was speaking about these are the insects. First one is Zygogramma bicolorata. Then next one, second, B1 is Epiglemma. Third, C is Listronotus and Carmentea lutetia. These are the species which or insects you can say which affect the Parthenium or easily eat or destroy the Parthenium species. This is the life cycle of Zygogramma bicolorata by Mexican beetle. Egg laying is in 4 to 5 days. Total life cycle is of 25 to 29 days. Then first is the instar larvae, 3 to 4 days. Instar larvae, then 2 to 3 days. Fourth instar larvae, 2 to 3 days. Then fourth larvae, instar larvae, 3 to 5 days. Then there is a pupal stage, and 9 to 11 days, pupa grows. Then newly emerged adult develops, and then finally Mexican beetle develops in 34 to 35 days. So you can see the total life cycle is of 25 to 29 days. This is the photograph how Mexican beetle eats the or feeds on the Parthenium. Parthenium can also be controlled by competitive plants. Like in non-agricultural land, it can easily be controlled by marigold. In Hindi we say genda, and other one the medicinal plant is acranthus, and other is cassia toria. By which we can easily control. These are the medicinal plants,
and by which we can control in non-agricultural land nearby. You can see railway station, lots of Parthenium are seen, or in nearby agricultural lands. By cropping these, planting these plant species, which can easily control the Parthenium species by in non-agricultural lands. Then Parthenium control in agricultural lands. If there are problem of Parthenium, then we can go for Sesbania. In Hindi we say Dhecha. Then sun hemp. By growing sun hemp also, we can also go for this control of Parthenium. Then by Bajra and Jowar. These species, mainly Jowar and Bajra, they secrete allelochemicals. So which stops in helping, which stops the Parthenium species in growing in agricultural land. So by intensive cultivation of sun hemp, Dhecha, Bajra and Jowar, we can go for, we can easily control the Parthenium species in our agricultural lands. Initiative by Krishi Vigyan Kendra, first in control of Parthenium. So we are in every year from 16th to 22nd August, we celebrate the Gajar Unmoolan Jagrukta Saptaha every year. So in this program, for a, you can say for a week, we go villages in different blocks of villages. We go and do meeting with farmers and discuss about the control, biological control, we can say chemical control, and about the disadvantages of the Parthenium species, which we give our lecture to the farmers, and so that they know about the bad effects of the Parthenium to the animals, which because it also causes asthma to the society. You can see the photograph. We are celebrating the, every year we celebrate the Parthenium Day. Every KVK is given the task to complete the program for Gajar Unmoolan Divas. You see, we are destroying the nearby village of KVK. We are destroying the Parthenium weeds. In this is our photograph of our KVK. We are destroying the, you can see, we are destroying by physical method. Using by physical method, we are destroying Parthenium. So thanks. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and more informative knowledge for about biological control eradication. I would like to call Manisha Singh to acknowledge the silencing sir. मनीषा, आप सादर आमंत्रित है, अपने आप को अनम्यूट करें और सर का आभार करें महाविद्यालय परिवार की ओर से। थैंक यू सर। महाविद्यालय परिवार एवं प्राणी शास्त्र विभाग के सभी सदस्यों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बायोलॉजिकल कंट्रोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके द्वारा गाजर घास उन्मूलन जागरूकता सप्ताह जैसे एक्टिव इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाए गए। सर, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मनीषा। सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और आप जैसे सीनियर साइंटिस्ट हमारे इस वेबिनार में साथ में हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के लोगों को इतने इजी वे में सुन पा रहे हैं, वरना अगर हम ऑफलाइन करते सेमिनार, आप लोग आते, समय निकाल पाते, तो ये ऑनलाइन का भी धन्यवाद है आप लोग के
रूबरू हो पा रहे हैं। थैंक यू सर फॉर योर गिवन योर वैल्यूएबल टाइम। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी हमारे स्पेशल जो भी इनवाइटेड स्पीकर थे, डॉक्टर KM सिंह सर, डॉक्टर सौरभ वर्मा सर, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर और हमारे बीच डॉक्टर SB सिंह सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम ऐसा चाहेंगे कि भविष्य में आप भी हमको अपने ज्ञान से बिल्कुल सींच दें। और मैं विलम्ब न करते हुए मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम डॉक्टर नीता सिंह से अनुरोध करना चाहती थी, मगर वो किसी जरूरी काम के कारण अभी उपस्थित नहीं हो सकी हैं। तो कृपया अब उनके बिहाफ में मैं डॉक्टर शशि सिंह से सादर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर शशि मैडम को पूरे आदर सम्मान के साथ मैं यहाँ पे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद शालिनी। अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी अभियान में गाजर उन्मूलन जागरूकता के तारतम्य में पार्थेनियम बीट प्रॉब्लम और इट्स मैनेजमेंट के हमारे वक्ता डॉक्टर KM सिंह, डॉक्टर सौरभ वर्मा और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर द्वारा हम लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की, जिन्होंने उसकी ओरिजिन, मैनेजमेंट और उसके कंट्रोल के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमको जागरूक होकर के सप्ताह गाजर उन्मूलन दिवस मनाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो समाज है जागरूक और उसको करने में या उसको हटाने में सहयोग प्रदान करे। आप लोग अपना बहुत ही अमूल्य समय हम लोगों को दिए। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा आपको भी परेशानी आई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे बच्चों को, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को भी बहुत कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। आगे इसके लिए आप लोगों को हम विभाग की तरफ से और अपने महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। हमारी प्राचार्य नीता मैडम की भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा के कारण हम लोग इस तरह के छोटे बड़े आयोजन महाविद्यालय में कर पाते हैं। आप मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के प्रभारी IQAC प्रभारी डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी जी तथा महाविद्यालय के विश्व बैंक परियोजना के अधिकारी एवं पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत सिंह, जिनके सहयोग से ये वेबिनार संपन्न हुआ, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभारी हूँ बहुत सारे प्राध्यापकों का, सहभागियों का, जिन्होंने इस वेबिनार में जुड़ करके इसकी गरिमा को बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी छात्राओं का, जिन्होंने धैर्यपूर्वक इस वेबिनार को सुना और समझा। मैं आभारी हूँ अपने विभाग के सभी सहयोगियों का, जिसमें कि डॉक्टर शालिनी कुंदे, पंकज, अनुपमा, अजीत, मनीषा और विभाग के अन्य सभी कर्मचारियों का, जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन में अपना सहयोग किया। मैं आभारी हूँ मीडिया बंधुओं का भी, जो हमारे कार्यक्रम को हमेशा प्रसारित करते हैं और प्रसारित करने के बाद ही हमारी कार्यक्रम का को पूर्णता मिलती है। तो मैं आभारी हूँ अपने मीडिया बंधुओं का और पुनः मैं अपनी छात्राओं को फिर से आभार देती हूँ और आशा व्यक्त करती हूँ कि हमारी छात्राएं अपने महाविद्यालय, गांव, घर, शहर सभी लोगों को जाकर के जागृत करेंगी, जिससे कि पार्थेनियम को जड़ से मिटाया जा सके और अपने पर्यावरण और अपने इकोसिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके, जिसके कारण कि हमारे जो जीव और जो पौधे हैं विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। अंत में मैं फिर से अपने तीनों वक्ताओं को, जिन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय हमें दिया, फिर से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे ऐसे ही वो हमारा सहयोग और मार्गदर्शन करते रहेंगे समय समय पर, जिससे कि हम लोग भी आपके वैज्ञानिक अनुभवों का कुछ लाभ ले सके।
और फिर से सब महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, छात्राओं और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बार पुनः मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी अपने इनवाइटेड स्पीकर्स, हमारे प्राचार्य, हमारे HOD, इस महाविद्यालय के अन्य महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गण, हमारी प्रिय छात्राएं, सबका पुनः दिल से महाविद्यालय परिवार से स्वागत, वंदन। हम सब यही कामना करें कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बने, हम सभी जागरूक हों, पूरा संरक्षण करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। देश से विश्व तक हम इस पर्यावरण जागरूकता को आगे बढ़ाएं और अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण करें। इसी तरीके के वेबिनार के आयोजन से हम लोगों को जागरूक करके अपने पूरे समाज का उत्थान करें। इसी सोच और भावना के साथ मैं पुनः सबका हार्दिक आभार करते हुए आज की इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। धन्यवाद।